हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक को चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में केवल यही नहीं देखेंगे कि केवल हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक चूज कर रहे हैं, बट इसके साथ हम ये भी देखेंगे कंपनी के जो ये स्टॉक के जो वैल्यूएशन है वो अच्छे कंप्यूटर की पर आने के बाद हमको गूगल पर सर्च कर लेना हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक। मैंने इसको पहले जो सर्च किया था तो यहाँ पर आ गया है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्लिक करने के बाद आपको आ जाना है तीसरा लिंक स्क्रीन का स्क्रीनर, तीसरा लिंक स्क्रीनर का शो कर रहा है, इसको ओपन कर लेना है। तो ओपन करते हैं तो देखिए हमारे सामने 79 स्टॉक्स आ गए हैं जो किस कैटेगरी में रखे गए, हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड स्टॉक या स्टॉक कैटेगरी में रखे गए। तो किस बेसिस पर रखे गए इसके लिए नीचे फॉर्मूला दिया गया है। डिविडेंड यील्ड मोर देन 2%, more than 2%, and dividend payout less than 100%. Profit growth greater than for 3 years 10%. Profit growth greater than 5 years for 10%, and profit growth 7 years greater than 10. And average 5 year dividend greater than 0. Dividend last 3 years greater than average 5 year dividend. Profit after tax greater than net profit last year into 0.8, and dividend last year greater than 3.5%. This query is formula division ये 79 का चूज कीजिए। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक के साथ साथ हम अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक चूज करेंगे जो समय के साथ अच्छा रिटर्न दिला सकें। तो उसके लिए हम 2-3 क्राइटेरिया रखेंगे, उसको ध्यान में रखकर हम स्टॉक चूज करेंगे। पहला कि हम डिविडेंड यील्ड मोर देन 2% लेंगे, एंड आरओसी जो हमारा रिटर्न ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड है तो मोर देन 20% लेंगे, एंड की प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो जो मोस्ट फंडामेंटल रेशियो है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल रेशियो है, इसको हम लेस देन 25 या 20% रखेंगे और कोशिश करें जितना कम उतना ही। और इसके अलावा आधा अन्य पैरामीटर जो होंगे जैसे नेट क्वार्टरली सेल्स, नेट क्वार्टरली प्रॉफिट, ये सभी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो हमें नहीं होंगे। और फ्रेंड इस वीडियो उनको ये ध्यान देना कि हम किसी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, केवल एजुकेशन पर्पस चीज़ें बता रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए तो यहाँ पर कुछ जो ये क्राइटेरिया बताए हैं इसके अनुसार स्टॉक को चूज करेंगे। तो कौन से बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक हैं देखिए पहला स्टॉक है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का डिविडेंड यील्ड मोर देन 2% है, इट्स गुड इनफ, गुड फॉर इनफ, and ROC return of capital employed 39.9 also good fine. And third है P greater than 25 है but not so more greater than, so you can take it. तो ये तीन पैरामीटर ऑलमोस्ट फिट बैठते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं नेट क्वार्टर सेल्स, क्वार्टरली सेल्स, क्वार्टरली नेट क्वार्टरली प्रॉफिट, नेट क्वार्टरली सेल्स, पॉजिटिव है। तो ये कैटेगरी ये स्टॉक हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक की कैटेगरी में शुरुआत लिस्ट में रख सकते हैं और फ्यूचर कंसिडरेशन। एंड इसके अलावा और दूसरा भी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, उसको देखते हैं डिविडेंड यील्ड 2.0, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.09, उसको देखते हैं, एंड PE 25.6। हमारे क्राइटेरिया पर एकदम बिल्कुल फिट जाता है। और इसके साथ अन्य पैरामीटर में पॉजिटिव क्वार्टरली सेल्स क्वार्टरली 13.36%, क्वार्टरली प्रॉफिट क्वार्टरली 6.5
देख सकते हैं। जैसे मार्केट कैप ये है, करंट प्राइस क्या है, हाईएस्ट और लो प्राइस क्या है, ई क्या है, एक वैल्यू, डिविडेंड और उसकी क्या दी जाता है, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, तो चार्ट भी देख सकते हैं, सोल्स क्या हैं, कंपनी के ईयर कंपेरिजन देख सकते हैं, फिर क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो क्या है, रिव्यू, तो सारे पैरामीटर एफआईडी, शेयरहोल्डर पैटर्न क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये सारे पैरामीटर चेक करने के बाद, सारे पैरामीटर चेक करने के बाद फिर हमको वाचिंग में तुरंत देंगे, उसके बाद सारे पैरामीटर चेक करने के बाद फिर करना है कि एक बार में इन्वेस्ट करना या नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और नॉलेजेबल होगी आपके लिए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फिर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अब तक डीमेट अकाउंट का लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जाके डीमेट अकाउंट